Ok, buenas tardes, everyone. A todos. ¿Cómo estáis? Am I audible? Buenos tardes, señor. Sí, Buenas tardes. profesor. ¿Has leído algo? Buenas ¿Has tardes, señor. estudiado algo o no? ¿O habéis? Sí, ¿habéis estudiado algo? ¿O habéis leído? ¿Habéis aprendido algo? Have you learned anything? Is there anything that I can, like, any doubts of whatever you have read? Chicos, shall we move ahead? Sir, give me a minute, please. What? Give me a minute, please. I need to check something. Sir, are we going to do possessives today? Like the examples of possessives? Example of possessive कर लेते हैं. Okay, sir. ठीक है, sir. Although we did ये जो ऊपर लिखा हुआ है, that's examples of possessives only. Yeah, yes, sir. These are the examples. Sir, Yes, please go ahead. sir, when do we use me or miss? Okay. Anybody who want to answer? When do we use me and when do we use miss? Sir, I will answer that. Yes, Saurabh, go ahead. Me. Yeah. Okay, Saurabh. Sir, we use me. For example, you will say that Saurabh is my student. So you will say Saurabh es mi estudiante. So here I'm only a single person. And when someone else, like there is Radha. So Saurabh and Radha son mis estudiantes. Sir, आप plural आ जाता है मतलब दो लोग आ जाएंगे. So whenever there are when there are multiple people, okay. So it all depends on the things we are talking about or the noun we are talking about. Noun that we are mentioning. Sir. Example, I'll say my friend is no, my car is red. So I'll say mi coche es rojo or rojo. Or if I say my cars are red, तो बहुत सारी गाड़ियां वो सारी रेड कलर की हैं तो हो जाएगा मिस कोचेस ऑन रोहोस. Okay. Sir, Sir, personal I want to pronoun ask always depends something. upon the This is number. Tanu here. One by one. First Mayank, then Tanu. Sir, possessive pronouns always depend upon the number of the noun that we are talking about, not the gender of the person who is So they speaking. depend on the gender also, ना. Example समझो. Gender of the noun. Gender of the noun. Example, अगर आप टीचर की बात कर रहे हैं और वो टीचर फीमेल है, आप प्रोफेसोरा लिखेंगे, so then you will write nuestra profesora. हमारी टीचर के लिए आप nuestra लिखेंगे, बट वही टीचर अगर मेल है तो आप nuestro लिखेंगे. Okay, sir. Next. Sir, this is not related to the question that you have asked just now. I just wanted to know where to put the diasis, that is the two dots on top of any particular letter. Suppose We have you. not yet discussed that. We have not Yes, discussed yet. अभी उसका requirement नहीं. Don't worry. Once it Okay. comes up extensively, then I'll tell you. Okay. Although thank you. that comes from German umlauts, बोलते हैं उसको umlauts. Spanish में ज़्यादा significance नहीं है. Example, where gu and sa. तो जब G के आगे लगेगा तो उसमें gu की आवाज आएगी. Gue, Gue, where gu and sa. Although Gue होता है गे, तो वो गे की आवाज की जगह गुए की आवाज आती है. We learn that. Don't worry. Okay, sir. Thank you. Anyone else? That's it. चलिए, let's move ahead. Okay. So I guess we did till here. So do you want to confirm some questions? Did you do this? Let's try this. Activity 5, A, B, C, D, E. So what you can do is you can put all the answers together, A, B, C, D, E, A का answer B, C, D, E, and put it in chat box. If there be too much wrong, then we can discuss.
No tengo, no, hoy tengo no pregunta. No, Mayank, this is not the right way to write Spanish. First of all, this will be hoy no tengo pregunta. और pregunta भी नहीं, pregunta. और preguntas में एक के ऊपर accent नहीं है. First. Next, Radha writes esta buen, esta bien, es bien, es bueno. Which option is correct? भाई ऑप्शन तो सारी करेक्ट है, बट बोलना क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना. व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या बोलना चाहते हैं. ऑल द ऑप्शंस आर फाइन. हर एक का मीनिंग ठीक है, हर एक का मीनिंग किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ है. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू कन्वे, व्हाट यू वांट टू से एज अ स्पीकर, एज अ कम्युनिकेटर. ओके. Okay, sir. The all options are Okay, sir. correct. Thank you. बेटा ऑप्शन आप क्वेश्चन का ही ऑप्शन दोगे ना, क्वेश्चन तो डाले नहीं आपने. एक्चुअली सर मैंने ना इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट पढ़ी थी तो उनमें बोला था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है तो कहीं पे मुझे फिल करने के लिए ना. नो सर ये ऐसा ही लिखा हुआ था तो इसलिए मुझे ओके. डाउट इसमें अगर सबसे ज्यादा इनकरेक्ट हमें ढूंढना है तो एस बी एन इज इनकरेक्ट. यस सर उन्होंने एसबीआई नहीं बताया था हाँ, बट एस सर बी एन इज इनकरेक्ट. बट बाकी सब हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग ठीक हो सकते हैं. एसबीआई इनकरेक्ट क्यों है मतलब ठीक है हाँ, आई टीच यू, डोंट वरी. अभी हम बी एन बो एन पे नहीं आए हैं. ओके पहले हम शेर विस्तार कर लें, फिर हम आगे धीरे धीरे करेंगे. देन जब हम बी एन और मतलब जब हम एडवर्ब और एडजेक्टिव का डिफरेंस करेंगे, देन आई टीच यू दिस. ओके सर Okay, so let's see the first one. It says estos son dash hermanos. So Miss Hermanos is perfectly fine. Okay. And say llaman Felipe y Jaime. Next, Laura es española, pero su padre es alemán. The next answer is su. Third one, dash padres son muy jóvenes. Tus Sir, padres son. tus. Why tus? Because padres plural है. अब तुम ये नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, तुम तो सिंगुलर हो तो मैं तू लिखूंगा. नो, padres plural, so that's why tus. Next, dash madre se llama Pilar y es enfermera. Mi madre se llama Pilar. Okay, तो mi madre. Last one, Javier vive en España, pero sus abuelos viven en Colombia. उसके grandparents कोलंबिया में रहते हैं. Clear? I hope no issues here. No, sir. ये तो No, हो sir. गया होगा, I'm sure, या नहीं हुआ? And you want to discuss, we can if you wish to. Let's do this also. Bit interesting.
Okay, let's discuss. I guess few people have done. So first one, Ana como se llama? First one, tu hermana. Answer would be mi hermana se llama Esther. I don't know what is this. Pierre, ¿de dónde eres? Yo soy francés, pero mis padres son italianos. De Roma, Susana, ¿a qué se dedican? Dash primos, क्या आएगा यहाँ पे? Tus. Tus primos, your cousins. तो बोलेगी mi prima Marta es ingeniera y mi hermano es médico. Then C1, Luis, ¿vives con tus padres? Do you live with your parents? No, ya no vivo con mis padres, yo vivo con mi novia. And last one, los hermanos de Raquel viven también en el País Vasco. Sí, sus hermanos because हम राकेल की बात कर रहे हैं. Okay. Okay, sir. चले? Any doubts Yes, you sir. have? Let's okay. Now let's see this. Okay, someone please read this. Seems to be quite important. So from the Spanish people, Spanish people are identified by names, nombres, and surnames. Apellidos. Apellido means a surname. Apellido means surname. Apellidos. They have at least one name, but it is also possible and common to have more than one, followed by two surnames. First surname, primer apellido, and second surname, segundo apellido. The concept of middle name does not exist in Spanish-speaking countries. Look at the following national identity card, DNI, Documento Nacionalidad de Nacionalidad de Identidad. This is similar to what is Aadhaar card here. Okay, Aadhaar is also like the identity proof. So that is DNI. This is there in all the means mostly European and Spanish Spanish speaking countries. So we call it Documento Nacional de Identidad. That's how the card looks. So I also have a UK card like this. Okay. India में Aadhaar card you can equate. चलिए next. From Spain and Chile in South America, it is known as Cédula de Identidad. With regard to the surnames, the first one is the father's first surname, and the second one is the mother's first surname. You will see it clearly in the following family tree. Árbol genealógico. Okay, so example, so this is the family tree. So Marcela Garcia Peña is married with Daniela Sanchez Gil. They both have kids, Cristobal y Josefina. Then Josefina got married to Jaime. They had 3 kids, Marta, Clara, Raul. Raul got married with Celia. They had 2 kids, Eugenia y Eugenia. Okay, I guess they've written the same name, some mistake. Then Marcos and Elena are married, and they've got 2 kids, Jaime and Ignacio. Now that's how the whole thing looks like. So if you pay attention, you will realize कि first is the name, second जो first surname है वो father का surname है, और जो second surname है वो mother का surname है. Okay? Yes or no? Yes, sir. But sir, for example, अगर mother और father का surname same हुआ तो दोनों 2 बार लिखे जाएंगे या 1 बार? 2 बार. Okay, sir. हाँ. Okay. So that's how it looks like. Then we move to the verb estar. Although I have taught you this, but let's go it super fast. Let's see this. It says marital status in Spanish is introduced usually by the verb estar. Estar means to be, like the verb ser that you have learnt in previous unit. So the conjugation is estoy, estás, está, estamos, estáis, están. And these are the few words which we can use to describe the marital status of people around us. So soltero is single. Then is casado or casada, that's married. Separada is separated. Then divorciado, divorciada is divorced. Viudo and viuda is widower or widow. Okay.
It says although estar is most commonly used verb, marital status can also be stated using the verb ser, mostly with soltero and soltera, viudo and viuda, with no difference in the meaning. Note the difference between the following two expressions. Example: separado and divorciado. Separado is separated, divorced is like legally divorced. Now, activity 6 can be done at home. You have to just put in the conjugations of estar. Okay, then we come to what do you call it? It's a audio activity, but I guess this can be done without audio activities also because there are options given for the blanks. So let's do this. This is important. Why? Because here you can, if you do the whole thing, you will come to know how to describe your family. And then today, let's do that. Let's describe our family in Spanish. Okay. So let's do this. This is quite important. हमने जितना अब तक पढ़ा है वो सबका resume हो जाएगा एक तरह से. Let's go through it. This is why 100 Days of Solitude becomes so difficult to read. I didn't get you. What do you mean by this? Sir, I was just referring to the family names, like Okay. that was. So you read it Yeah. in English? Yes, sir. So like, yeah, in English. Okay. Pretty nice. So now you have to pay attention on the conjugations of AR, ER, IR verbs, say, restar, singular, plural, masculine, feminine, everything all put together. If you put all these things together, you'll be able to do this. Although इसमें I guess हमें first plank और D part में थोड़ा issue आ सकता है. Rest everything is doable because those verbs we have not done yet. We'll do it soon. सर सोब्रिनो क्या होता है? Sobre means about. अबाउट. Sir, what is soltera? Soltera is single. अभी ऊपर हमने जो बॉक्स पढ़ा था उसमें soltero soltera वर्ड. Sir, इसमें ये आ रहा ना कि ella no tiene marido. Sir, वो married नहीं है या फिर अच्छा ठीक है Marido single. means husband. She doesn't has a husband. तो सर इसमें separada आएगा या फिर soltera Which soltera line है? is it? Which line is it? सर लास्ट में है mi madre tiene una hermana, mi tía Carmen, ella no tiene marido, es हाँ. casada, soltera, separada. Soltera. उसके पास husband नहीं है. सर separada भी आ सकता है, soltera भी हो सकता है ना? नहीं, उसमें लिखते कि husband के साथ नहीं रहता. उसमें है Okay. ही नहीं ना. Tiene is to have. है ही नहीं. हो गया सॉरी. Okay, let's move ahead. Let's do it super fast. Dash Nuria. Me llamo, me llamas, mi llamo. What's the right answer? Me llamo. Me Me llamo, llamo. me llamo. Perfect. Me En llamo. mi familia somos cuatro: mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Mi padre dash. Se llama. Se llama. Mi padre se llama. Se. Okay. Victor dash médico.
Es médico. Es- एस नदी को सेर वर्ब है ऑक्यूपेशन बताई हमने फादर की y trabaja en un hospital and works in a hospital mi madre dash Lucia Se llama. se llama Lucia y trabaja en un instituto and works in an institute es Profesora. dash de Es matemáticas Profesora. Profesora. es profe Sora. why professor because Lucia की बात हो रही है Raul dash hermano Me. mi hermano मेरा भाई my brother next el hermano de mi padre mi dash Tío. Tío. mi tío Sebastián dash casado Está. estar verb आता है casado है to get to be married está casado dash mukesh se llama Estrella Soup. so his wife named Estrella mi tío Sebastián and Estrella dash go to school because TNN. Tienen. why TNN क्योंकि they have. third person plural they have two daughters Gloria and Angela son Miss dash Primos. son Miss Primas है ना Gloria is a girl Primas. Primas अच्छा ठीक है सर दोनों लड़कियां हैं. ठीक है both of them are girls next mi madre tiene una hermana mi dash Carmen Tía. mi tía my aunt Carmen ella no dash marido no Tiene. S dash S soltera Soltera. mi familia y yo Vivimos. vivimos en Madrid Even. why viven Vivimos. Vivimos. Vivimos, na? My family and I, we live in Madrid, the capital of Spain. Perfect. So now these are the few names, I guess, which we went through some yesterday also. You can just read the affectionate and the short form or the short name, that how they call people. Then let's read this. This is very important. This will tell you some facts about Spain and the Spanish family today. Someone please go ahead. Sir, The shall most I? common family model in Spain is the traditional one, Okay, formed by a Mayank, father. can you use till the first two paragraphs, then Mayank does the reading. Okay, let's mix it. Okay. Okay. The most common family model in Spain is the traditional one, formed by a father, a mother, and the children, one or more. The situation counts for 34.9%. Among them, the biggest group is formed by couples with only one child, 16.4%, followed by couples with two children, 15.3%, and lastly, couples with three or more children, 3.2%. There is also a growing number of single-parent families, 9.4%, most of them formed by a single mother. 86.3% of the couples living together are married. 99.3% of them are heterosexual couples and 0.7% homosexual. Homosexual marriages in Spain are legally recognized since 2005 upon approved by the Spanish Congress, El Congreso de los Diputados. There, there is a growing number of people living alone, 14.3% under 65, and also couple without any children, 21.6%. One out of every three young people aged between 25 and 34, approximately 6 million, still live with their parents. The main reason is the difficulty to afford a life on their own. When people get married, it is uncommon that they stay and live with their parents. They move out of the family home. However, relationships are close amongst close relatives, that is grandparents, parents and siblings. The family is important for Spanish people, and as a general rule, they prefer to live near each other, and they usually gather together for celebrations like birthdays, weddings, Christmas and other family events. Source: adopted text, Instituto Nacional de Estadística. Okay, I hope you must have got it. It was in English only, that how much percentage lives alone, how much with parents, even after marriage, and this and that. Okay, readable and doable. Perfect. Let's move ahead. So this is done. This is done. Now let's come to descripción de las personas, means description of the people. So which are the verbs that we use to describe people? You may note it down. First is the verb ser,
second is tener, and third is llevar. I repeat, ser, tener, llevar. Ser is to be, tener is to have, llevar is to wear or to carry. किसी चीज को पहनना. Someone please read the text in blue. No one. Shall I read? Se llama Martin, es Sir, joven, alto y delgado, es guapo, tiene los ojos verdes y grandes, tiene el pelo corto y rubio, lleva gafas y barba, Lleva gafas y barba. lleva gafas, Lleva. lleva gafas y barba, es inteligente y simpático. No, it's inteligente. G के आगे E है तो ख बोलेंगे. Sorry, thank you for correcting. Perfect. So if you pay attention, से के बाद हमेशा adjectives आते हैं, तेने के बाद some nouns and llevar also some nouns. For example, se llama Martín, es joven, alto y delgado, es guapo, he's handsome. Tiene los ojos verdes y grandes. They've got big and green eyes. Verdes green. No, sorry. Verdes green. Tiene el pelo corto y rubio. Got short and silky hair. Lleva gafas y barba. Has got specs and beard. Es inteligente y simpático. Is intelligent and kind. So now let's differentiate and put them across the table with ser, tener and llevar. Ser, tener and llevar. Let's do it right now. Sir, can you tell me what was Yeva? Llevar is to carry or to wear. Okay, sir. Sir, how we have to do this one? So, like S Hoven, we need to write S alto, S delgado, like that, or something like हाँ ओके लेट्स अंडरस्टैंड. ऊपर शेर वर्ब देखेंगे कहाँ कहाँ पे है. लेट्स अंडरलाइन द वर्ब शेर. तो शेर के आगे क्या लिखा है? खोवेन, तो वहां खोवेन आ जाएगा. नेक्स्ट एडजेक्टिव इज आल्तो विच इज टॉल. देन डेल्गाडो इज थिन. देन गुआपो इज आल्सो विद शेर. ओके देन वी गॉट तेनेर में लोक्स ओखोस लिखा है उसने. फिर तेनेर के बाद हमने लिखा है पेलो कोर्तो, शॉर्ट हेयर. रूबियो भी लिख सकते हैं. ये वार के बाद हमने गाफास लिखा है. ये वार में वी कैन आल्सो राइट बारबा. And then inteligente and simpatico will also come with ser. Clear? You have to divide कि ser के साथ क्या आएगा, तेने के साथ क्या है, ये वार के साथ. Let's look ahead and let's learn these and then we can come back. Directly इस पे आ जाते हैं. Okay. So what happens is we can use the verb ser. Ser के साथ directly you can use adjectives. Example ser. Example means in terms of conjugation के साथ soy eres, somo, soy son. Then we write any adjective. The adjective is guapo, guapa, feo, fea, alto, alta, baco, baca, bajo, baja. That's also somewhere you'll pronounce. Gordo, gorda, and delgado, delgada. So guapo, guapa is handsome, feo is ugly, alto is tall, baco is short, gordo is fat, and delgado is thin. Okay? Clear? Yes, sir. Okay, next. Then we can use tener. Tener के okay wait, शेर के साथ और भी है. नहीं, शेर के साथ no, this will come with pelo only. So shall I type this and explain you? Oh yeah, इसमें समझ में आ रहा है. Then we have got tener el pelo. Tener means to have. El pelo is hair. So to have hair. कैसे कैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे? मोरेनो, कास्तानियो, रूबियो, पेलिरोको, कास्तानियो, कोर्तो, लार्गो, liso, rizado, ondulado.
Sir, could you write the meaning beside it so we can just take a screenshot of it? What do I do? Sir, the meanings of these like मीनिंग descriptive आप nouns. लिखो अपनी अपनी नोटबुक में. I can tell you. Sir, लिखो. okay. So moreno means dark or brown. It's a dark hair. Okay. Then next is castaño is again brownish kind of what do you call chestnut कोई color होता है chestnut जैसा जैसा what do you call different shade of a brown Kind of light brown, you can say. you can say. Dusky type. Okay. Dusk अब यार बालों के color you'll have to look. If I should not sound sexist, but if I was a girl, I would tell more clearly. But mainly brown तो दोनों ही brown है. So I'll tell you, castaño would mean थोड़ा सा goldenish brown, and moreno means dark brown. Okay. Then we come to rubio. Rubio means blonde. Okay. Then we go to corto. Then we got pelirrojo. So pelirrojo people are there. There are a lot of people who are pelirrojo in Spain. So peli word आया pelo से. Rojo means red. So red haired. लाल रंग के जिनके बाल होते हैं. Those people are known as pelirrojo. सर वो रेड हेयर नेचुरल होते हैं? नहीं. हाँ कईयों के नेचुरल भी होते हैं बट कुछ कराते भी हैं. मोस्टली दे गेट इट पेंटेड. दे गेट इट कलर्ड पेंटेड. कमियां फिर से आ गया. नहीं बट नेचुरल भी होते हैं लोगों के. Then we move to corto. Corto is short. Largo is long. Liso is सिल्की और पतले सीधे बाल. लीसो वैसे होते हैं. रिसादो इज कर्ली एंड ondulado इज वेवी बाल. ondulado is like wavy. Example. सर रिजादो क्या था? Risado is curly. Sir, Castaño. What? One Sir, by please repeat from Largo. one. Largo is long, बड़े बाल. Liso means thin and straight hair. पतले लंबे बाल. जैसे वो एकदम straight नहीं होते एकदम पतले पतले ऐसे. That's liso. Risado is curly. जैसे सचिन के पहले बाल थे वो proper curly थे. ondulado is wavy बाल. थोड़े से wavy जब ऐसे wave बाल होते हैं. सर रूबियो था ब्राउन. Rubio is blonde बाल. Blonde मतलब blonde. हाँ golden color के proper. golden. Castaño. Exactly. Sir, what is Castaño? What is? Sir, Castaño. It is Castaño. written. Again, castaño is a different shade. Different shade. Let me give you like it's a shade of brown only. Different kind of brown. So I'll try and show you some pictures on Google, then I guess we'll be able to guess it better. Okay. Then we are writing ser rubio. अगेन जो वहां कलर का कलर्स थे वो अब हम पर्सनालिटी कलर भी लिख सकते हैं कि ये पर्सन ऐसा है. Clear? So we can use those for people also, that he's a castaño या he's blonde or she's blonde. So blonde बालों का कलर भी हो गया और हम person को भी blonde कहते हैं. So that's why you see in the third and fourth column ser के बाद we've used the same adjectives. The last one I guess you might not know, calvo. So calvo means bald, जिसके बाल नहीं होते. That person is calvo or calva. So the B picture can we say is Castano? What?
The next page in the book, there's a picture, the photograph B. I You didn't say, get you. call him as Castano. So castaño can be the color of the hair also, and we can call him the person also. Suppose the person is brown, we can use es castaño. If the person is blonde, we can say es rubio. If the person has red hair, we can call him es pelirrojo. If the person is bald, we can call him es calvo or calva in a girl's case. Okay, let's move ahead. Then we come to tener los ojos. Now tener means to have, los ojos means eyes. To have the eyes of which color and what's the thing. So azules, what is? अच्छा हमने colors अभी नहीं करे ना? We have not done the colors. No, sir. No, sir. No, Okay. no, sir. Okay. Azules is blue, blue eyes. Next is verde. What is verde? Green. Green. Then we got marrones means brown. सर मैरून भी हो सकता है ये मैरून नहीं maroon नहीं. या ब्राउन Maroon is brown in Spanish. That's a falso amigo. Okay, किसी को अच्छा there is a concept known as falso amigo जो हम थोड़ा late on सीखेंगे. You may note it down somewhere. Falso amigo. Falso means false, amigo means friend. False friend मतलब क्या होता है? That there is a word which will look कि इसका मतलब ये होगा but उसका मतलब वो नहीं होता, कुछ और होता है. Example, introducir एक verb है. Introducir देखने में लगता है कि इसका मतलब होगा to introduce. बट उसका मतलब टू इंट्रोड्यूस नहीं होता, उसका मतलब होता है टू पुट समथिंग इन द पेपर, इन द एनवलप. दैट्स इंट्रोड्यूसर. टू इंट्रोड्यूस का मीनिंग होता है प्रेजेंटार, टू प्रेजेंट समवन. गॉट इट? सो दैट्स नोन एज फाल्सो अमीगो. फ्रेंड है बट फॉल्स फ्रेंड है, मतलब देखने में लगेगा कि आई नो दिस वर्ड बट इवेंचुअली यू विल द मीनिंग विल समथिंग बी एल्स. ओके सर. ओके. Then we've got claros. Claros means clear भी होती है, bright भी होती है. Bright eyes or clear eyes. Then oscuros is dark eyes. That the eyes are very dark. Black में ही dark हो जाएंगे. Then we've got grandes. I guess grandes what we have done many a times. Sir, big. Yes, sir. Big eyes. Small eyes. Small eyes. Small eyes. छोटी आंखें. चलिए next. Sir, oscuros. Dark. Oscuros. Dark. चले आगे. So ये pequeños. Small, छोटी छोटी. Pequeño is small. Pequeños. सर व्हाट इज ये वार के आगे जो लिखा हुआ है बिगोटे. ये वार मीन्स टू कैरी और टू वियर, कैरी और टू वियर. तो ये वार का मतलब कॉन्जुगेशन होता है ये वो, ये वास, ये वा, ये वामोस, ये वाइस, ये वान. नॉर्मल AR वर्ब की कॉन्जुगेशन द वे वी डू, वील कॉन्जुगेट दिस आल्सो इन अ नॉर्मल मैनर. इट्स अ रेगुलर वर्ब. सो गाफास मीन्स ग्लासेस. बट अगर मेरे को बोलना है सन ग्लासेस तो आई विल से गाफास डेल सोल. यू मे नोट इट डाउन वहीं पे. Gafas del sol. Del is off, sol is of the sun, means sunglasses. Then we have got yevar bigote. Bigote is a mustache. Bigote is mustache and barba is a beard. So we don't say that he has mustache or he has beard. We say he carries beard or he carries mustache. Okay? So we use the word yevar. इसमें येवार में we can write clothes also. कपड़े भी हम लोग clothes येवार में ही लिखते हैं that he is carrying or he is wearing. We can also write reloj that he is carrying a watch. ऐसे यहाँ पे reloj, तो we can say reloj also. So bigote. Bigote means mustache, mooch. And सर barba हाउ डू यू से wristwatch. सर रेलो बोलेंगे सर डायरेक्ट या फिर reloj ही बोलेंगे. There is no word.
Sir, Pekas, Tener plus Pekas. Pecas means freckles. Freckles means ऐसा कुछ. I guess I'm not sure. Is it झुर्रियाँ? I don't know the word in English. I know it in Spanish. Wrinkles. Wrinkles. Freckles is the actual word. So freckles are the brown spots on skin. Okay, so that is the thing then. That's Yes, sir, the it's meaning. the same. Yes, sir. Yeah. Okay. Let's move ahead. Although wristwatch को हम लोग बोल सकते हैं reloj de pulsera because pulsera means a wrist. We can say if suppose we have to mention wristwatch only. But हम जब watch की बात कर रहे हैं और वहीं खड़े हैं तो we'll say ना कि this watch is beautiful. So we'll say este reloj. Okay. But reloj de pared तो बोल देते हैं हम लोग. Wall clock. Yes. So again, this is a listening activity you can do at home that the three people will be describing three relatives and then you will match which one is which. Okay. Now these are few things. Let's see. This guy is what do you talk? What can you say about these people? Example, this one is Hills. We can say Yeva Gafas. Next is Yeva Barba. He's got beard. What we can do about this guy? LS Delgado. El pelo corto. He's very thin. इसका क्या बोलेंगे? Él tiene un nariz grande. इसकी nose बड़ी है. What can we say about this guy? इसके बाल कैसे हैं? Curly. Curly. Then, okay, जो लीसो में क्या था? This is what liso is. जैसा I told you ना, thin and long hair. ये ऐसे बाल हैं लीसो. Okay. So Okay, that's sir. Resado and that is so जो लड़का है ई में that is Resado और जो लड़की है the girl in the part K she has got ऐसा wavy बाल. इसके wavy बाल हैं. Okay. तो इनको हम बोलते हैं ondulado. Then this guy G में क्या स्पेशल है? ये वो रोपा. ये कपड़े तो सबने ही पहने हैं but what's I guess he's very thin. You can say that again. Él es muy delgado. Okay, then this girl pelirrojo, she's got red hair exactly. So any girl or any guy who has got red hair can be pelirrojo. What happens to this girl? What can we say about her eyes? Oscuro. I don't know. Brown eyes लग रही हैं कैसी लग रही हैं? I don't know. Dark लग रही है. Sir, grandes. Oh, so we will say ella tiene los ojos. Oscuro. He's mute. Grandes. Okay. Then Her what beautiful again? eyes. This girl looks very short. So then we can say bakha. Then the next girl, what can we say about the next girl? बाहा बोलेंगे but इसे blonde भी तो बोल सकते हैं ना. Ruby. Blonde, so I guess would be P wali girl, if I'm not wrong. That's the proper blonde with golden hair. Brownish, goldenish. So this again, she has got ondulado, el pelo ondulado. Okay. Then L guy is calvo. He doesn't have hair, so we can say calvo. Then this girl again has got red hair, pelirroja. This is a pelirroja if this is a girl. Okay. Next, this guy, I don't know, although he doesn't look too fat, but ठीक है. For describing, we can say that L. बाहो gordo. Gordo. दो use कर सकते हैं सर. Short and हाँ बिल्कुल use कर सकते हैं बिल्कुल. You can use 10 comma डाल के. Okay. Then this girl, she again, I guess she also has short hair. Means for girl, Corto. Wavy, so wavy hair. Corto. Then this is so ella es rubia. Okay. Next, ella tiene los ojos azules, blue eyes हैं इसकी. Azules. Then él lleva bigote. Lleva bigote, yes sir. Bigote. Then this guy is joven. Joven means young. And then the last one. lleva sombrero बोल सकते हैं कैसे? हाँ, lleva sombrero बोल सकते हैं बिल्कुल. Then this guy is viejo. Viejo is old. अरे wait, नीचे option you could have matched these. Okay, you can.
So again you can again classify thin air में कौन सा है, शेर में कौन सा है, येवार में कौन सा है. Clear? This can be your activity. Perfect. Then again, audio activity. There'll be three people described. I guess these four people will be described: Claudia, Margarita, Miguel, Ernesto, and you have to tell line is for whom. Okay. Same goes for this one. A track is there. You would be able to listen the track, and then you have to say who's which person. There are 4 5 people. One is La Chica, se llama April. April उसका नाम है. Second is Mariana. Third is Paulo. Fourth is Hans or Hans. So that's the total. So you have to again listen and tell who's which. वैसे I guess this you can do without listening also. इसमें description पूरी नीचे given है. Let's do it right now. A B C D. You have to tell me 4 names. Pictures are given, description is given. Let's do it. Sir, which one, sir? ये जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, I'm sure. Okay, sir. Done? Sir, April, Paulo, Hans, Mariana. Okay. Can someone read it and try and translate also if possible? Sir, I will try it, sir. Okay. En esta imagen hay Imagen. en esta imagen hay cuatro personas. In this image, there are 4 people. La chica es irlandesa. And the girl is from Ireland. Yeah. Se llama April y es estudiante de arquitectura. Her name is April and is student of architecture. Tiene 23 años. She is 23 years old. Es alta y delgada. She is tall and thin. Tiene los ojos grandes. Y lleva melena y felcuyo. She has big eyes. Felkio नहीं है ये. Fleckio. Flequillo. Sir, lleva melenda y flequillo. मेलिंदा कहाँ है? मेलिंदा नहीं है वहाँ पे. Sorry, sir. क्या है? Melena. Melina. What is Melina? No, sir. This is something related to a girl's vocabulary. How do I say? What is the main? I don't know about main. सर हेयर ही होते हैं. नहीं hair नहीं होते हैं. Not at all. She's wearing something ऐसा. Flakio. Let's check.
उसके टी-शर्ट के बारे में तो नहीं होता है। उसके क्लोथ के Flakio बारे is में। fringe. Now what is fringe? I don't know. सर लॉन्ग एंड लाइक बैंग्स, जिसके So फोरहेड hairs में के आगे बारे में बैंग्स है. हैं, हाँ, so उसके this is related to hair. लॉन्ग हेवी ఉన్న हेयर्स हैं. forehead. Okay. So again, girls' vocabulary I have no idea about. I don't use. तो सर ये फर्स्ट गर्ल के बारे में हो गया, ए वाली गर्ल के बारे में। Is it about the first girl? Yeah, because she looks 23 years old. The other one She doesn't. has bangs and highlighted hair. Okay, highlighted hair. Okay, I guess that's the so flakia verb comes from flakiars. I guess flakiar, if I'm not wrong. I guess yeah, that strokes ऐसे है ना, is the right word for that. पॉसिबिलिटी सर, हमें नहीं पता। I wish I knew all the vocabulary in terms of girls and makeup and things. Fringe I guess वो होता है ना, सर being साधना कट। सर highlighted I guess. बैंग्स, सर बैंग्स हैं ये. सर साधना What? कट जैसे Okay, I don't सब। know the वो जो vocabulary. फोरहेड पे उसके बाल आ रहे हैं वो सर बैंड। Okay, these things. Okay, perfect. Okay, cool. You got it na? यस सर, यस। Mariana es una mujer de 41 años. She's 41 years old. So I guess this is the last one. So Mariana is the extreme right one. Any word that you don't know? Es cocinera. What is cocinera? शेफ। सिंगर. Cook. Chef. No, chef word तो chef होता है हमारे पास. chef. This is cook. You can write she's a cook. Okay. Chef के लिए chef भी बोलता. You have a word. Travaka restaurant ठीक है, ये सब ठीक है. Okay, Hans es hombre alemán de 42 años. कोई लग रहा है 42 years का दोनों में से? सर बी वाला. B1. B1. B is 42 years old. German. B1 looks 42 years. I don't think. चलो ठीक है, होगा यही होगा. C. Vale. Entonces सर lleva जर्मन है ना, लगता नहीं है। gafas. तो gafas तो नहीं, wait. Gafas तो right वाले ने पहने हैं. So the right वाला is that guy. ये सर सी हो गया सर। She is 42-year-old guy. And then the chico se llama Paulo. Es portugués y tiene 49 años. Es director de वो लग रहा है ना, देखा मूवी डायरेक्टर लग रहा है सेकंड वाला. तो सेकंड वाला is Paulo and third वाला is Hans. Okay? यस सर। Let's move ahead. So okay, let's do these. So what are you supposed to do is try to guess the meaning of the adjective on the left by matching with their opposite on the right. Let's do it right now. This would be interesting. So all these adjectives can be used with the verb ser. ये सारे के सारे adjectives आप ser verb के साथ use कर सकते हैं. You should means easy. Sir. Sir. Yes, please. I didn't realize it was on mute. बोलिए. Sir, can you tell the meaning of this word? मैं तो सारे meaning बताऊंगा ना. Don't worry. First you try. So we'll tell all the meanings.
सर 2 ही हुए हैं सर। What? सर पीछे I वर्ड could में do only डेढ़ 2. Not audible. Sir, I could do only 2. You could do only two. Is it? Is it that tough? Sir, I could do on Let's do it. 4. Okay, let's do it then. Then I'll pitch in and do it. Okay. What is simpatico? Please write down. Simpatico means kind. Kind. Simple. Nice. अच्छा, Kind is kind. a better word. Kind. और जो इसका ऑपोजिट वर्ड है वो है antipathico. Means unkind. Next is trabajador. सर वो 9 का नहीं होगा? नहीं, you have to match ना, सामने सामने नहीं हो रहा है. Okay. Trabajar is a verb which means to work. काम करना. Sir, workaholic हो गई. So Sir, trabajador hard and working. trabajador is hard working. Please write down. So trabajador का opposite क्या हो जाएगा? Sir, Hard lazy. working का opposite is Sir, lazy होगा. lazy. तो Sir, जो first word है calado. vago. Vago means lazy. Then we have got intelligente means intelligent. जो समझ में आ रहा होगा I'm sure. तो इसका opposite क्या होगा? F. Estúpido. Stupid. Next is sincero, sincera. Means sincere. Sincere. तो sincere का क्या होगा opposite? stupid. Monty Riso. What? Riso. Mentiroso is a liar. Liar. Extravertido. I guess वो sincere टीमिडो का का हो होगा. सकता है भाई, sincere है वो झूठा है ऐसा बोल सकते हैं. Okay. Next is alegre. What is alegre? Happy. 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 Sad क्या हो जाएगा? Triste. जो last word है triste means sad. Then we've got serio, seria means serious. So operative will be bromista. Bromista, broma means a joke. So bromista is a person who jokes a lot. Means funny person you can say. Sir, jolly. Jolly, okay, हाँ, it's funny. Jolly. Next is timido. Timido is shy. A person who is Timid. very timid. Timid. Timid, shy है. तो यहाँ पे हो जाएगा Extravertido. Extravertido. extrovert. Although इसका opposite introvertido भी हो सकता है. Okay. Next is optimista means optimist person. तो इसका Pessimista. Pessimista. हाँ, D part pessimista. So if you pay attention, कुछ वर्ड्स है जिनके आगे स्लैश ए नहीं लिखा है, तो वो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों के लिए सेम है. Clear? If I have to say that this he is optimistic, so I will say él es optimista. मैं optimisto नहीं बोलूंगा. Clear? Yes, sir. Perfect. Next. Where were we? Generoso means generous. ये बहुत generous है. So I guess इसका opposite होगा egoista. Egoista. Egoista means selfish. Egoist नहीं है ये. Selfish meaning है. Next. Where were we? Sir, interessante. Interessante means interesting. Interesting का opposite क्या होगा? Aburrido. Aburrido. Aburrido, aburrida, boring. Next. Tranquilo, tranquila means calm. Tranquilo means एकदम calm, शांत स्वभाव का इंसान. Nervoso. Sir, nervioso. Nervioso, जो nervous हो जाता है. Okay. तो calm और nervous. Next is hablador. Hablador means talkative or habladora. So
इसका ऑपोजिट हो गया कायजादो कायजादा, मीन्स द वन हु स्टेज क्वाइट, जो चुप रहता है, शांत नहीं, चुप रहता है. Okay? Kaya is to keep quiet. Last one is sencillo. What is sencillo? Simple. Sir, sensible. नहीं, sensible नहीं है. Sencillo is simple and complicado means complicated. Clear? Chicos. So these are somewhere around Yes, sir. 13 into 2, 26. 26 new words that you have found. You may use these to describe your family. Family कहीं डाल देंगे ना अंदर ऐसा. एग्जाम्पल बोल सकते हैं मारियो एस tímido pero Maria no es tímida. Mario is shy but Maria is not shy. Okay? अभी the thing I told you, Mariana is optimista pero Julio is pessimista. Means Mariana is optimistic but Julio is pessimistic. Although ista same रहेगा. Jorge es trabajador, Cecilia es trabajadora. Jorge is hardworking and Celia is also hardworking. This you can do on your own. Now let's pay attention. I guess this I have told you earlier only. Adjective number means singular and plural. How to make something singular and how to make something plural. So here we learn Mario y Maria son tímidos. Why tímidos? Because masculine feminine दोनों है. तो tímidos हो जाएगा. Carla y Raúl son inteligentes. E ending है तो S लग जाएगा. Same inteligentes. Trabajador है तो trabajadores. ES ending हो जाएगा. And if both of them are girls, we'll write trabajadoras. Clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes. Then we move to adjectives. Degree of comparison means if we have to say how much the percentage of the adjective that we are saying is. Example, when describing, we might want to state the degree of comparison in which a certain adjective or characteristics applies. Example, Ana es muy guapa. Ana is very beautiful, very pretty. But if I say Guillermo es bastante sincero, Guillermo is quite sincere. तो bastante के बाद adjective आएगा, bastante का मतलब हो जाएगा quite. Okay. Next is these were the two examples of affirmative. Now let's see word expressing degree of comparison, which makes it a negative adjective, less strong. Example, Marcos es un poco vago. तो हम लोग un poco के बाद adjective लिखेंगे. Marcos is bit lazy, थोड़ा सा ही lazy है. Poco means little. Okay, then we have got Arturo es algo aburrido. Arturo is bit boring. Boring है but वो कम boring है, ज़्यादा नहीं. Clear? And then we can add no es muy. So Nacho no es muy trabajador. Nacho is not hardworking. Clear? Which sounds better than Nacho is lazy. So no es muy plus positive contrary adjective. जो हमें बोलना है हम उसका ऑपोजिट डालेंगे नो एस मुई के साथ. मीन्स ही इज नॉट वेरी दिस मच. क्लियर? Then we say the diminutive form of adjective is used as well as soften them when they might seem offensive and a bit insulting. For example, gordo gorda turns into gordito gordita, baka turns into bakito bakita, kayado turns into kayadito kayadita. These are usually formed by replacing the last vowel in adjectives by ito. So in short, अगर हमें किसी चीज को ज्यादा कम करना है या फिर ज्यादा बढ़ाना है तो हम लोग ito या ita ऐड कर देते हैं. Ito in masculine, ito in feminine. Okay. So this is you can classify the adjectives on the basis of masculine singular, feminine singular, masculine plural, feminine plural. Easy. Then S, ES and ista and consonant plus S और ES ये हम सब पूरी table complete कर सकते हैं based on the adjectives. Then again these also bracket में given है, you have to fill in the right form. Right form मतलब either it's masculine or feminine, either singular or plural. चारों में से एक. Clear? Then again listening activity है, इसमें they would be saying that the person is deportista independiente, either he wears gafas, he is a patient, he
bald, moreno, ordenado, pelirrojo, fuerte, sociable, nervioso. So जहाँ पे भी जिसमें बोलेंगे उसमें टिक मार देंगे कि इस वाले इंसान में और this person has this ability or adjective or speciality. Okay. Then we move to parecer and parecer se. क्या ये हम अभी कर सकते हैं? अभी हम कर तो सकते हैं बट क्या हम अभी करेंगे? नहीं, हम लोग इसको कुछ वर्ब्स के बाद करेंगे वापस. What is Iago, Feliciano, and Fabian? नेम है, नेम. तो ऑडियो में इन तीन लोगों की बात हो रही होगी, वो बताएंगे कि यागो काल्वो है या फिर पेली रोको है या फिर क्या है. क्लियर? Okay, sir. नेक्स्ट. ओके, चले आगे. Yes, sir. Okay, I think some connection issue. Okay, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए लेट्स मूव अहेड. सो पारेसेर एंड पारेसेर से, चलो इसको पढ़ ही देते हैं. So let's do it right now. It says another verb used for description is parecer. Parecer means to seem, कि मुझे ऐसा लगता है. ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है. एग्जाम्पल, मी वेसिनो parece serio. My neighbor seems to be serious. मुझे मेरा नेबर थोड़ा सीरियस लगता है. आई एम नॉट श्योर वो है नहीं है, बट ही सीम्स टू बी सीरियस. ओके. El hijo de Elia parece un poco travieso. Elia's son seems to be a bit naughty. Seems वाला sense है यहाँ पे. Clear? So the conjugation is paresco, pareces, parece, parecemos, pareceis, parecen. Clear? सर ये irregular verb, सर ये irregular ये verb है. regular verb, exactly. Okay. Okay, sir. Next. Then we move to बस पारेस को ही अलग है, बाकी से तो नॉर्मल है. बाकी तो ईयर एंडिंग वर्ब की है. पारेसेर also means to resemble, बट वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव वर्ब पारेसेर से, उसके पीछे से आ जाता है. जैसे यामार से हमने सीखा है. आई डोंट नो, हैव यू लर्नड यामार से? नॉट येट. Not yet, sir. Okay, so let's learn reflexive verb only. Reflexive verb है. Reflexive verb वो होती है जिसके पीछे से आता है. Those are known as reflexive verbs. But इसका एक मतलब और होता है. Reflexive verbs are those verbs जिसमें the doer receives the action. जो एक्शन कर रहा है उसी के ऊपर उसका रिजल्ट होता है. That's also one of the definitions. तो एग्जाम्पल देखते हैं. एस्तेफीना से पारे से आंसू मादरे, मतलब एस्तेफीना रिजेंबल्स हर मदर, क्योंकि वहां पे से पारेसेर लिख दिया. इसका कॉन्जुगेशन क्या होता है? जो आगे वाला कॉन्जुगेशन है ना पारेसेर का, वो तो नॉर्मल चलेगा, बट जो से है उसका कॉन्जुगेशन हो जाएगा मे ते से नॉस ऑस से. आई रिपीट, मे ते से नॉस ऑस से. ओके. So as a reflexive verb, parecer se is conjugating like yamar se, which you learnt in unit 1. It says we have learnt in unit 1. Did we miss out? No, sir. So वही है मे पारेस्को, ते पारेसे, से पारेसे, नोस पारेसेमोस, ओस पारेसेis, से पारेसेन. तो नोट है, प्लीज नोट दैट द स्पेनिश स्ट्रक्चर फॉर पारेसेर से प्लस आ प्लस algin. Algin means someone. So you always have to put a preposition a, that I resemble to my father, she resembles to her sister. ऐसा लिखेंगे ना, तो that's an indication. Clear? So parecer means seems to be like this, and parecer se means to resemble. So again, you can do this at home. It's a group of friends talking about or describing each other. So you may do it at home. Okay, do you want to do this? Let's do this. So these are famous Spanish personalities who speak Spanish. ये सब स्पेन के नहीं है, but ये सब स्पेनिश बोलते हैं. So Isabella Allende, Pedro Almodovar, very famous guy. Rigoberta Menchú, Fernando Alonso, again quite famous.
Fernando Botero, famous. Juanes, again famous singer. Javier Bardem, again a famous actor. And Shakira, I guess everyone knows Shakira in India. Yes. So let's match. तो उसमें क्या है? They've given one line description. Es actor español, es alto, tiene el pelo corto y moreno. So you just have to match. Let's do it right now. So I guess first one is for Javier Bardem. First one is for नहीं Javier सारे करो Bardem. एक साथ. You do all of them together, then we can discuss. अरे यहाँ पे भी फ्लेकी वर्ड आया है, देखना ही पड़ेगा. बालों से रिलेटेड है क्या? Yes, sir. I guess. So it's bangs. क्या होता है? So उसके Bangs. जो फर्स्ट Bangs. वाली है The इजाबेल forehead. आयेंदे, उसके माथे पर बाल आ रहे हैं ना वो जो. अच्छा, उसको बोलते हैं बैंग या फ्रिंज? Yes, sir. Bangs बोलते हैं उसे. जो बोलते हैं फ्रिंजेस. Peculiar. Bang. ये तो आप वो बता दो. ठीक है चलो. ओके. डन. No, sir. Give me 1 minute, please, sir. Sir, what is Canoso? What is? Pelo Canoso. Sir, white. Yeah. कहाँ पे? Sir, fourth वाले में. Es un director de cine español. Tiene el pelo canoso. Okay, so the guy is ऐसे Almodovar. Gray बाल. Canoso is gray hair. So let's discuss. First one, es un actor español, es alto, tiene el pelo corto y moreno. Sir, Javier Bardem. Javier Javier Bardem is the right answer. Next, es escritora chilena. She's a Chilean writer. Lleva el pelo corto y lleva Isabel. Isabel Allende. Es un cantante colombiano. Tiene el pelo largo y castaño. D. Fernando Juan. Alonso. No, I don't think so. Fernando is. So Juanes. Juanes है भाई, सिंगर देखो. Juan. हाँ, Fernando सिंगर माइक के साथ खड़ा हुआ. अच्छा, नहीं बट वो सिंगर लग भी नहीं रहा कहीं से देख के. लग रहा है तुम्हें? ठीक है सर. Okay, next is es un director de cine español, tiene el pelo canoso. So I'll tell you. So the most famous Spanish director of movies is Pedro Almodovar. Okay, one of the most greatest also. जो second number पे है. He also looks like an actor. Actor ही लगता है देखा जाए तो. But he's the finest Spanish director. Next is es un pintor colombiano, es mayor, lleva barba y bigote. Fernando Botero. Yes, he's an artist. Okay, he's a painter. उसके बैकग्राउंड से भी देख सकते हैं उसके हाँ, exactly. He's a painter, but mostly known as an artist, Colombian artist. Next is es una líder indígena guatemalteca, es morena y tiene la cara redonda. What is redonda? देखेंगे, redonda means round. उसका face round है. Cara means face, पूरा face round है. Rigoberta Menchú. Rigoberta, okay.
Next. Then we have got es un piloto español de Forma 1. So piloto also means pilot, Fernando Alonso. but piloto also means the racer. He's a racer. Alonso. Nando Alonso, quite famous guy if you follow it. Yes, sir. Next is es una cantante colombiana, es rubia, lleva el pelo largo y ondulado. Shakira. Shakira. I hope everyone knows Shakira. If there's someone who doesn't know Shakira, please listen to her songs. Okay, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. You can go ahead with the word. Castaño is brown haired, but then again blonde भी वो golden की shade आ जाती है. Okay, if you go to Rubio, है ठीक है blonde. Okay. So I guess this vocabulary is quite interesting and very useful because this will help you describe people. So if you have to describe someone who's around you or someone you know, how will you describe? Chicos. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's move ahead. These are all the answers. You may do it and okay, ये सब answers किए हुए हैं. You can do it at home. Then we move to comparisons. Sir, तो ये तो मैं तुमको how टाइप can we करके put, दिखा. That would be better, I guess. sir, how can we put accent by keyboard? Is there any shortcut? देखो मैक में Actually, तो I अगर was तुम looking उस on की को दबा Google. के रखोगे तो आ जाएगा. विंडोज में you'll have to find the what do you call accent का शॉर्टकट की इन वर्ड फॉर्म. वर्ड में नहीं तो एक ऑप्शन और होता है इंसर्ट का. इंसर्ट में जाके स्पेशल कैरेक्टर्स में जाओगे ना तो भी मिल जाएगा विंडोज में. सर कीबोर्ड से कैसे करेंगे? दैट यू हैव टू फाइंड. YouTube गूगल ना भाई. टिल्डा था. इट डिपेंड्स ना कौन सा कीबोर्ड है. मैक का तो आई एम टेलिंग यू, मैक का अगर किसी के पास एप्पल का लैपटॉप है तो यू हैव टू सपोज आपको आर मींस आपको अगर ए पे डालना है तो आप ए को दबाए रखेंगे तो देयर बी लॉट ऑफ ऑप्शंस द वे आई डू. नॉर्मल कीबोर्ड है. नॉर्मल कीबोर्ड है तो आप गूगल पे ढूंढिए उसको. ठीक है, उसमें शॉर्टकट की 100% होगी. चले आगे. Yes, sir. Perfect. Let's move ahead. अच्छा ये this I'll type and teach because इसमें से टेबल बनी है. This is comparativos. Comparativo means comparison. ठीक है अभी सीधे. So let's understand one thing. हम जो कंपैरिजन सीख रहे हैं वो कंपैरिजन हमेशा दो चीजों में होता है. ओके, फर्स्ट. सेकंड, कंपैरिजन किस चीज का हो रहा है हमें वो चीज देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट वुड बी adjectivo. Adjectivo means adjective. We'll put either más or menos plus adjetivo plus k. K means than. एग्जाम्पल देख लेते हैं. Okay, it means I am more tall than my best friend. More tall इंग्लिश में कुछ नहीं होता. इंग्लिश में क्या होता है? I am taller than my best. Okay, equals clear. Yes, sir. Yo soy menos gordo que mi hermano. हो गया I am Less fat. less fat means I am thinner. मैं उससे पतला हूँ. तो सर हम इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो कैसे करेंगे?
इंग्लिश पर वर्ड्स के हिसाब से नहीं, हम लोग लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते बिकॉज इंग्लिश में उसके अलग मीनिंग हो सकते हैं, तो जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है हम लोग वो फॉलो करेंगे। ओके सर। Sir, what is mature? हम्म In first sentence, mature. Mi mature amigo. बेस्ट फ्रेंड। Sir, how to differentiate between mass and menus? हम्म Mass and menus, when to use? mass and menos, mass means more and menos means less। ओके क्लियर, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, So sir. can we translate it Yes, as more taller and less thinner? बट मोर टॉलर लेस थिनर इंग्लिश में कुछ होता नहीं ना, टॉलर एंड थिनर। ओके, यस और नो? Yes, sir. यस। सी। Okay, let's move ahead. तो ये समझ में आ गया, this in this category what we did is we just did for adjectives. So now let's look for, अगर हमें adjective के अलावा हमें अगर noun के साथ ऐसा करना है, एग्जाम्पल noun में nombre बोलते हैं स्पेनिश में, उसमें क्या होगा, मास और मेनोस प्लस nombres प्लस के, तो यहाँ पे आ जाएगा yo tengo means I have, más libros que mi primo। सर ये पीडीएफ आप शेयर करोगे मेरे साथ? मैंने कल कही थी किसी बात, आई डू इट अगेन। आई सेंड सर टू ग्रुप द में अभी व्हाट्सएप। तक सेंड नहीं करी है किसी ने। मैंने कर दिया ब्रो, चेक द ग्रुप। हाँ चेक करा भी मैंने, नहीं मैंने पीडीएफ ग्रुप में तो मैंने पीडीएफ कन्वर्ट ग्रुप करके में भेजा नहीं, है। ग्रुप में, हमारे वाले ग्रुप में तो नहीं मेरी है। ग्रुप में तो नहीं आई शायद। तो कोई और ग्रुप भी है क्या? देख लेंगे यार। तुम लिंक दो तो मैं आऊँ उसमें। कमेंट में मैं ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, आप इस पे भेज दो, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अरे मुझे लिंक दो, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ यार। हाँ कमेंट तुम में मैं लिंक दो ईमेल आईडी डाल रहा हूँ अपनी, चेक करो। भाई लिंक ओके भेज दो ओके यार। ओके 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 ओके, टू मच ऑफ डिस्कशन। डाल लो ना अपने आप, दोनों नीड टू स्पीक अप लाउड। ओके, डू इट व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑन द ग्रुप। ओके चलिए, लेट्स मूव अहेड। Sir, nombre means name also, na? नोमरे मींस नेम आल्सो, नोमरे मींस नाउन आल्सो। तो यहाँ पे आ गया यो, क्या बोल सकते हैं तेंगो की जगह, तेंगो ही लिख लो। यो तेंगो मेनोस, तो यो तेंगो हटा देते हैं। आई मेनोस estudiantes en mi clase। वेट, नहीं काफी बड़ा हो जाएगा, there'll be issue, you won't be able to get it। so ella कहते हैं, ella tiene menos novelas que su hermana, means she has less novels than her sister। clear, yes or no? Yes, sir. because ओके, यहाँ पे हम लोग इसको बी कर देंगे। देन वी कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट में आ जाएगा वर्बोस। अब हम वर्ब्स को करेंगे, वर्ब को हम लोग कंपेयर करेंगे। दिस वुड बी वर्बो प्लस मास और मेनोस प्लस के। एग्जाम्पल,
Yo duermo más que mi padre. मतलब I sleep duermo more I than my don't think father. तो तुम लोगों को आता है, तो यो trabajo कर देते हैं. trabajo तो आता है, I'm sure. यो estudio कर देते हैं. Duermo I sleep, correct? Yes, but अभी I guess most of you might not. तो यहाँ पे भी amigo कर देते हैं. padre से क्यों कंपेयर करना? ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा I study more than my friend. ओके, एक और लिख लेते हैं. यो como menos que mi prima. So I eat less than. Okay? Yes or no? Yes, तो sir. वी कैन, तो अभी हमने क्या किया, हमने कंपैरिजन पढ़ा सिर्फ 3 चीजों को लेकर. फर्स्ट था एडजेक्टिव, अगर हमें एडजेक्टिव कंपेयर करना है. सेकंड है noun, means which here we are comparing books and here we are comparing novels. ठीक है. यहाँ पे हमने गोर्दो किया और यहाँ पे हमने आल्तो किया. And here we are comparing the verbs. Example, मैंने estudiar verb को compare किया और यहाँ पे comer verb को compare किया. Clear? Yes, sir. Okay, now this was comparison. Now we'll talk about igualdad. Igualdad means, अभी देखते हैं, इसको भी 3 तरीके से करते हैं. We'll do it in, there are 3 ways of doing it. 3 ways मतलब we'll be comparing 3 things, 3 parts of speech बोलते हैं. First would be adjective. तो इसमें हो जाएगा तान प्लस एडजेक्टिव प्लस como. Example, yo soy tan alto como mi mejor amigo. मतलब I am as tall as my best friend. Got it? तो यहाँ पे तान और como का मतलब हो गया as और as. Yo soy tan gordo como mi hermano. Means I am as fat as my brother. Clear, chicos? Am I even audible? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Perfect. Okay, next. Then we'll do for nouns. Nouns के लिए हम लोग क्या करेंगे? Tanto, tanta, tantos, tantas. Plus nouns. Plus como. Example, yo tengo. अब जो libros वर्ड है वो masculine plural है, तो हम लोग masculine plural लगेंगे. Tantos libros como mi primo. So I have as many books as my cousin. Clear? Next is ella tiene. Novelas है feminine singular, तो tantas. Novelas como su hermano. She has as many novels as her sister. Clear? now verb पे आते हैं. Yes, verb में sir. हम क्या करेंगे? सिंपल है, tan प्लस verb प्लस como. Yo estudio, नहीं tan नहीं, यहाँ पे tanto आएगा. Lo siento. Yo wait, again my bad. पहले verbo, then tanto, then como. Yo estudio tanto como mi amigo. I study as much as my friend does.
मैं उतना ही पढ़ता हूँ जितना मेरा दोस्त पढ़ता है। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Tanto como mi prima. I eat as much as my cousin. लास्ट कर लेते हैं सुपरलाटिवोस, सुपरलेटिव्स। इसका एक ही फंडा होता है, एल, ला, लॉस एंड लास प्लस एडजेक्टिव प्लस नहीं प्लस मास या मेनोस प्लस adjetivo. Example, yo soy el más alto de la clase. I am the tallest in the class. Okay? या फिर ella es menos habladora en la clase. मतलब she is the least talkative in the class. She is the least talkative in the class. सबसे कम बात करती है वो. ओके? Yes, sir. Yes, sir. चले आगे? सर या मेनोस के पहले ला नहीं आएगा? Yeah, my bad. Clear, everyone? So what you can do right now, let's see book में क्या क्या दिया है. Let's see where do we stand in terms of the book. Is it something similar or pattern अलग होगा तो similar. Okay, let's see equality. Can you see the green box? Equality में क्या बोल रहे हैं? तान प्लस एडजेक्टिव प्लस कोमो. हमने पढ़ लिया इक्वालदाद में. ओके? सुपीरियोरिटी में क्या हो गया? मास प्लस एडजेक्टिव प्लस के. इंफीरियोरिटी में हो गया मेनोस प्लस एडजेक्टिव प्लस के. देन नेगेटिव में आ गया नो प्लस वर्ब प्लस तान प्लस एडजेक्टिव प्लस कोमो. Let's see examples. Ernesto y Samuel son más altos que Marisol. Means Ernesto and Samuel are taller than Marisol. Taller. Next is Cristina y Javier son tan trabajadores como Julia. Cristina y Javier are as hardworking as Julia. And third one is Edurne tiene los ojos menos oscuros que Julia. Edurne has less darker eyes than Julia. Clear? ये जो बॉक्स है these are the exceptions. ये exceptions हैं. लिख लेंगे. जैसे इंग्लिश में एक्सेप्शन होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे एक्सेप्शन इसमें है. Bueno, mejor and el mejor. Malo, peor and el peor. Grande, mayor y el mayor. And pequeño, menor y el menor. Means small, young and youngest. ऐसा. Big, elder and eldest. Clear? Yes, sir. ये तो बुक में है ही. तो it says Ana es mayor que yo. Ana is older than me. Mis hermanos son menores que yo. My siblings are younger than me. Ser optimista es mejor que ser pesimista. Being optimistic is better than being pessimist. Mistake. तो ये एक्टिविटी है, घर में ट्राई करेंगे. एग्जाम्पल खोरके और फेरमिन में हम दोनों को कंपेयर करना है. डेलगाडो एडजेक्टिव के ऊपर. सेम विद माथियो एंड एलिसा डेसऑर्डेनाडो में. And then big eyes and small eyes, you have to do all that things. Clear? मैंने इससे ज्यादा ही पढ़ा दिया although. तो if you pay attention and जैसे मैंने मास और मेनोस एक साथ बता दिया. तांतो, तांता, तान and तांतो I have told all together. Verb मैंने यहाँ पे बता दिया. तो इसमें क्या है, if you pay attention, यहाँ पे सब adjective वाले हैं. This all are adjective based.
तो स्ट्रक्चर अलग है. दिस इज नाउन बेस्ड, nombre जो मैंने बताया, एंड दिस इज वर्ब बेस्ड. क्लियर? Yes, sir. अगेन ऑडियो है, सुनना है किसका, हुज एल्डर, हुज यंगर, हु वेज हाउ मच, हुज लेंथ इज हाउ मच, किसके कितने, वेयर डू दे वर्क, हाउ मेनी आवर्स डू दे वर्क, व्हाटएवर. तो ये घर में कर लेंगे. You can try this again at home. Alvaro और Thomas के बारे में they have given the information. Example, Alvaro is 32 years and Thomas is 36. So you can write Thomas as elder के Alvaro. So you'll write Thomas as mayor के Alvaro. या फिर you'll write Alvaro as menor के Thomas. Alvaro is younger than Thomas. Thomas. Okay. That's how you can write more things about it. So then we come to the use of comparativo del uso de ser estar para describir a alguien. Again, if you have to describe someone, then how do you use ser and estar? First, let me check कितना बचा है, क्या आज हो सकता है, तो ही हम आगे चलेंगे. Okay, so let's finish this unit. This unit shall be finished today. Okay, let's read this. This is interesting. Please read. Anyone, someone? Yes, please go ahead. सर यहीं से पढ़ना है. As you already know. Yes. As you already know, the verb to be is translated in Spanish as serve or estar. These two different verbs are used differently depending on what we want to express. In the previous unit, we learned that ser is used to talk about nationalities. So, Espanol, mi amigo es India, and jobs, mi padre es arquitecto, Rosa de Dora, and estar is used to talk about how we feel. Como estas boys, estas muy bien. And also as the most common form to describe marital status. Alexandra es Estia soltera, Augustine está casado. Soltera नहीं, soltera. Soltera. When describing someone, we need to differentiate between sir and estar. आगे सर. हाँ, पूरा पढ़ना नीचे. Sir is used to describe the permanent or inherent characteristics of a person, the way she always is physically, and also describing his or her personality. Josephina is alegre. Josephina is happy, which that she is happy person, that he is her permanent way of being. Alejandro as aburrido. Alejandro is boring, that so say that he is always a boring person. Manuela as delgada. Manuela is thin, meaning she is a thin person. So in short, यहाँ पे they are using to describe permanent inherited characteristics of a person. But with estar, what they'll do is they'll describe someone's mood or acquired qualities or physical state of as the result of a change. Example: Josefina está alegre. She's happy means she's happy right now in this moment. When we say Alejandro está aburrido, he is bored means he's bored only right now. वैसे वो ठीक रहता है. And Manuela está delgada means she is probably lost weight and is thin now. मतलब पहले नहीं थी वो. Okay, so we can use the same adjectives for say also and for estar also. So temporary and permanent वाला change हो जाएगा यहाँ पे. First वाले में क्या बोल रहा है कि वो कोसेफिना एक खुश इंसान है. She is a happy person overall. But if I say Josefina está alegre means she is happy right now. Temporary बात आ रही. Clear? So although we'll be learning more of adjectives जहाँ पे शायद meaning ही change होता है, यहाँ पे meaning भी similar ही है ना, where the meaning will change.
We'll do it later on. Activity 5 you can do at home. Activity 5 is very important. CSR का difference है, uses है, very important. हम लोग next class में इसको discuss भी करेंगे. Okay, first thing. Next, let's do this now. सर असाइनमेंट के बारे में बताते हैं, असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है? That you have to ask the university. Means जो आपको email ID दी हुई है आप उस पे मैसेज कर दो. सर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. सब कुछ. Vikas has cleared all the doubts. If anyone knows, please help him out. रिकॉर्डिंग भी है उस फर्स्ट क्लास की, उसमें आप सुन सकते हैं. हाँ, you can see the recording ना. विकास सर ने सारे क्वेश्चन आंसर्स किए. Just go through all the questions and all your queries will be answered very easily. रिकॉर्डिंग का लिंक है किसी के पास? It comes on your email every day. Correct me if I'm wrong. रिकॉर्डिंग का लिंक हो तो शेयर कर दो. हर किसी की ईमेल में नहीं आता सर लिंक. तो आपकी ईमेल वहां रजिस्टर नहीं होगी फिर. Yes, we are receiving that. Classroom. Those who have the recording can share the link on the group. But I am sure. Abhi, wait. Someone typed on the chat. It says, please check your email. But I guess sir, we are receiving it every day. मेरी email पे भी आ रही है in fact. नहीं सर, सबको नहीं आ रही है ईमेल. Okay. सबको रिसीव नहीं हो रहा है. सबके ईमेल शायद रजिस्टर नहीं करे उन्होंने. Okay, so it says please read the following guidance and submit. तो बस ये सर ने दे दिया. You submit by 31st, day after tomorrow. Okay, let's read this about celebrations. सर कैसे करना है, मतलब कोई लिंक वगैरह कहाँ पे अपलोड करना है वो तो बताएं कुछ. सर चैट चेक कीजिए ना आप. सर चैट में तो बस ये लास्ट डेट लिख दी है ना इन्होंने. ओके. चैट में तो सिर्फ लास्ट डेट लिखी हुई है. उसके ऊपर लिंक दिख रहा है आपको एक? सर लिंक में उसमें कुछ नहीं है. इसमें भी ये गूगल फॉर्म ओपन होता है, वहां पे लिंक नहीं है. RC1 students. सर लिंक मिसिंग है. Sir, I guess the recordings are only for the RC1 students available. सर इसमें जब लिंक ओपन करते हैं ना, लिंक में सर गूगल फॉर्म का लिंक नहीं दिया है इसमें. हमारे कोर्स के लिए मिसिंग है. Wait. Sir, they are asking to share the enrollment number. अरे एक मिनट वेट करो. ये देखो जरा, ये क्या गिवन है बताओ आप. अब अपना कोड और लोकेशन देख के यू जस्ट क्लिक ऑन. सर नहीं आ रहा ना, इसमें लिंक नहीं है. आप चेक करो, CSLC का है ही नहीं इसमें. याद तो गया. नहीं सर, आप चेक करो, बैक जाओ एक मिनट. स्टडी सेंटर 7175 का चेक करो. बैक जाइए सर. Which is your CSLC? ये रहा ना. कर दो बस यहाँ पे ऐड फाइल. कैसे आएगा यार अब? ठीक है. CSLC का कहाँ है? अरे ये क्या लिखा है देखो ना. एक मिनट सर देख रहा हूँ. बस CSLC के लिए. हेलो हेलो. पहले लिंक को देखो, उसमें पूरा पर दे रखा है लिंक. आप खोला नहीं, पहले ही नहीं मिल रहा. हाँ ये है तो सही, जब मैंने दिखा दिया सबको क्लास. नहीं सर बिल्कुल मैं देख रहा हूँ. ये पढ़ते नहीं है बिल्कुल, बिना पढ़े ही बिल्कुल तो स्टार्ट हो जाते. नहीं मिल रहा. सबमिट कर दो. प्रिय रंजन सिंह. यस सर. क्या ईमेल आईडी है आपका? ठाकुर करके. हाँ तो मेल चेक करो ना, गई कि नहीं गई. सर यहाँ पे मेरी मेल आईडी है. मैंने ईमेल भेजा सर इसी ईमेल आईडी पे, और रिकॉर्डिंग के लिंक भेजे हैं अभी. रिकॉर्डिंग के लिंक भेजे हैं पर सर असाइनमेंट का लिंक नहीं है.
अरे एक मिनट। बच्चे वो छोड़ो, ये देखो एक आएगा BSL 001, यहाँ टिक करना है, यहाँ टिक करना है, अपलोड करो। करना है, यहाँ ऐड फाइल करनी है, यहाँ पे यस नो करके सबमिट कर देना, बस इतना ट्रिकी थोड़ी है यार। ठीक है सर। गॉट इट? ठीक है हो गया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। एनीवन, एनी एल्स डाउट? देखो आप लोग ना, तो आप सिर्फ एक बार करके आप बोल दोगे नहीं हो रहा, तो ऐसे नहीं होता ना, यू गो थ्रू इट, देन कम ऑन, एक दो बार हाथ पैर तुम्हारा, यू शुड गो एंड सर्च फॉर योर थिंग एंड देन डू इट। ओके चलिए, सो लेट्स डू दिस एट होम, घर में पढ़ेंगे इसको, फिर टुमारो वी शैल कंटिन्यू नाउ। I hope whatever we are doing, you're able to grasp it. Please go through all the vocabulary. This vocabulary is very very important. जो मैंने फर्स्ट डे कहा था कि 5-6 वर्ड्स कर लेंगे रोज और 2-3 वर्ब्स कर लेंगे, वो सारी vocabulary आपको यहाँ से मिल जाएगी। So don't say after 4-5 months कि सर हमें तो सिर्फ 20-30 वर्ड ही आए, ज्यादा कुछ नहीं आया, because you have to put in your effort. Okay, you have to continuously put in your efforts. So I expect everyone will go through all the recordings. तो बात की बात है, पहले अपनी लिस्ट बनाना शुरू करो, verbs की, words की, and start making sentences, and if you do it you will be able to do it, else so no one will be able to tell you. Okay, I'm able to understand Spanish but I can't make any sentences. आप रोज बनाओ ना 3 सेंटेंस, रोज 3 सेंटेंस बनाओ और वीकेंड पे उसका ऐसे बना दो। ओके बस, ज्यादा होगा तो मेल कर देना, we'll see if we can check, और किस दिन क्लास में ही चेक कर लेंगे सबके सामने शेयर करके। ओके स्टूडेंट्स, Yes, sir. any more doubts? So tomorrow we'll finish block 2, I guess last हमारा यूनिट बचा है, and then we'll start with block 3 also. Okay, this would be it for today then. Gracias todos. But is there anything to clear your doubt? We have got 2-3 minutes left. Gracias, Chino. Okay, gracias todos. Gracias, señor. Gracias, señor Palma. Okay, chicos. So we'll meet in the next class now. Tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Gracias, señor. Gracias. Gracias. ठीक है सर, let me stop the recording.